Kare mock interview. Are you all जी set? सर. यस सर. Please introduce yourself. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है. अभी मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी. और बीपीएससी में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है. सेकंड मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू है. मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है. और फ्री टाइम में मुझे डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है. Okay. Your optional subject. सब पीएसआईआर. Why did you choose this optional subject in BPSC? Sir, because I have done my graduation in political science, currently pursuing my master's in this subject as well. So I believe I am more comfortable in political science and international relation, and I can do better in this subject. Okay. Are you aware as to why public administration was separated from the subject of political science? Sir, as per my knowledge, public administration deals with the working of the administration, whereas the political science as a subject has a separate sphere which deals with working of the state as well as its ideology, how state functions, and how people or the political philosophers perceive the state and its subject. So this is why maybe because of the different nature of the subject, they both have been separated. Do you think that politics can be separated from administration and vice versa? Sir, I believe they both are correlated in some sphere. Like politics, the political people are the ones who are running the administration at the higher level, at the top level. So I believe that they both are related, but they also have different sphere. They have separate sphere as well. Okay. How do you see India's relation with the neighbors? They are not so good So with whom? with her neighbors. With our neighbors. Yes, sir. We cannot say in totality that the relation with India and its neighbors is bad or not good, because we have if we have Pakistan and India's relation, then we also have India and Bangladesh relation, which has been very cordial since the present government of Sheikh Hasina has come to power. We have India and Bhutan relation, which has been cordial since 75 years. We then have Sri Lanka as well and Maldives as well. So we cannot say that in totality India's relation with its neighbors is bad, but there has been bone of contentions because of India's size. We have boundary dispute and so on. Okay. Do tell about some of the irritants which have emerged of late between the bilateral relations of India and Maldives. So the irritants that has emerged is because of the pro-China establishment uh, that was in place before the present government. So because of that, there was instances of a campaign that was run by the people that is called India Out, because of the investment that has been made by India, like the infrastructure and the airport that India was developing in Maldives, which was met with the several resistance. However, with the present government that has now been formed, it is perceived that the relation will take a positive turn. Okay, very good. Israel Palestine conflict. How do you Okay, so see the positioning by India? Do you think that India is siding more with Israel rather than with Palestine? So since 1990s, we have seen that India has dehyphenated its stand toward Israel-Palestine conflict. We do not see that the bone of contention should guide our relation with Israel or with Palestine. So when the Israel was attacked on October 8 by the Hamas, the terrorist organization of Palestine, India was deeply hurt as well as strongly condemned the act that was done by the Hamas. So India's stand has been very clear.
We do not support any kind of terrorism, be it with us or with any international organization or the international nation state. So I believe that India's stand has been clear on that front. Whereas India has also been very proactively engaging with the Palestinian people who are suffering from the conflict. We are calling for the ceasefire. We are also supporting them in terms of goods and stuff. And we are also rallying around UN General Assembly to for the ceasefire. So I believe India is following its strategic autonomy by condemning the Hamas as well as calling for the ceasefire. Okay. Why should we select you? Sir, I believe that first of all, I feel that I have all the qualification. I am young. I am just 25 years old right now. So I believe ki I can I can learn better. I can adapt to the environment in a better way. And I feel since I want to learn and I want to face the difficult challenges which is in the state, I feel that I should be, I should be selected. Okay. Last question from my side. Do tell three weaknesses of your personality. Weaknesses, I wouldn't call it weaknesses. I would say that I have to work upon those traits that I have right now. So first, I believe that I take a lot of time to say no to a person. Like I am not, I will not say, I will not say somebody's request or reject somebody's request uh, at at face value. I will try to reason myself that okay, this person's request may be for his may be important for him, or I should work for them. So I feel that I take a lot of time to say no to a person. Second would be that I reason a lot. Like I feel that if I'm trying to make a point in my head only, I will try to give an antithesis of it. Like before discussing itself, I will try to, if I'm giving a reason, I will also give a antithesis of it in my head. So I feel that I should not think a lot, not think a lot, not think unnecessarily a lot. So I believe these are the two qualities, these are the two traits that I have to work upon. These are not bad traits, but I feel that these traits should be worked upon. Okay. Thank you. Thank you, sir. Over to Pooja ma'am. समर शकील जी, आपके जिले की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप मौका मिलने पर सबसे पहले दूर करना चाहेंगी? मैम, मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ, मेरा जो क्षेत्र है वो मालवीय नगर पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र में एज़ सच तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक जो डीटीसी के जो बसेज़ हैं, वो बहुत अनियमित तौर से चलती हैं। लोग ज़्यादा मेट्रो का उपयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन मेट्रो में किराया ज़्यादा लगता है कंपेयर टू डीटीसी बसेस। सो आई फील कि इस फ्रंट पे काम किया जा सकता है कि रेगुलरिटीज़ हो, और जो ऐप में भी दिखाते हैं कि जो डीटीसी इस टाइम पे आने वाली है, उसमें भी हमने इरेगुलरिटीज़ देखी हैं। तो ये कनेक्टिविटी वाला फ्रंट है जो मैं इस पे काम करना चाहूँगी। कैसे आप इस पे काम कीजिएगा? आपने कुछ सोचा है? मैम मैंने इस बारे में ये हो सकता है कि जो जीपीएस से अटैच किया जाए जीपीएस, ताकि अचानक से तो आ नहीं पाता सिलेंडर के लिए, आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, एक दिन बाद आएगा, तो एक और एक्स्ट्रा सिलेंडर देना चाहिए। तो पहले तो यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। दूसरा ये है कि आप एक और सिलेंडर देंगे तो एक रिफिल में हमेशा रहेगा। तो ये है। प्लस सर महँगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो बीपीएल वाले हैं उनको उनका रिफ़िल में भी उनको सब्सिडी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब तो ऐसा हो रहा है कि गिव अप सब्सिडी कैंपेन चल रहा है, तो बहुत लोगों ने जो वेल टू डू फैमिली है उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी है। तो इसका फ़ायदा बीपीएल फैमिली को देना चाहिए कि सब्सिडी उनकी ज़्यादा कर दी जाए, तो शायद वो ज़्यादा अपनाएँगे इस चीज़ को और वो रिफ़िल करने की तरफ ध्यान देंगे। ओके, बहुत अच्छा जवाब। ओवर टू भावना मैम। Thank you, ma'am. Samar Shakeel ji. जी You मैम, are pursuing your post graduation from IGNU, right? yes मैम। What is the full form of IGNU? IGNU stands for Indira Gandhi National Open University. What are the provisions for the open schools in the new education policy?
Ma'am, I'm not aware about it. Sorry. Tell us in brief about the history of Delhi. About the history of Delhi, ma'am, Yes. it goes back to the time of first. If we talk about mythological, I think moderator for pollution. Plus, we have the agriculture states like Bihar, agriculture states like UP and Punjab as well as Haryana, where this practice of stubble burning is actually creating a lot of inconvenience to the resident of Delhi NCR. So these are the two issues. Plus the factory and the regulation regarding the factories, since we have Ghaziabad and Faridabad, where most of the factories are located, their working is not that much regulated. This might be the reason. Plus the weather of Delhi, it becomes extreme during winters, unlike Kolkata or Mumbai. So this also adds fire to fuel to the fire. Okay. Okay, tell us that you must have heard about the Sat Nishchay of Bihar government. Ma'am, I couldn't understand your question. Could you please repeat Sat it? Nishchay Part 2, you must have heard of it. Yes, ma'am. What are its components and the various schemes related to each heading? Okay. First is, ma'am, I might be I might mix up No issues, Satnisha issues. Part 1 as well as Satnisha 2. So, Go first ahead. is Yuva Shakti Bihar Ki Pragati, where the employment schemes are being run by the Bihar government. Even BPSC is running the teachers recruitment. Uh, Second is Arakshit Rozgar Mahilaon Ka Adhikar, where the government talks about giving reservation to women, giving 33% vertical reservation to women. And uh, third would be Har Ghar Pakki Sadak or Nali, uh, which talks about cleanliness and infrastructure related to cleanliness and health. And I cannot recall further right now. Okay, Sorry, thank you ma'am. very much. Your interview is over. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Samar Shakeel ji, जी मैम जी सर you are a very good candidate. जी You speak well. It was such a pleasure talking to you. You have a very pleasant personality. थैंक यू Uh, सर थैंक यू सो your मच confidence is very good. We notice that there is calmness and poiseness in your personality, especially when you speak. You speak with utmost calmness. The speed of your speech is very excellent. That is moderate, and that is being appreciated by honorable board members who are usually senior citizens. So the throw ओके of words per minute is very accurate on your part. So appreciation on these fronts. ओके सर Your थैंक Hindi and English, both very good. You have excellent command over English and Hindi both. So a strong part. That is your political science is very strong. That is also your strong point. Several questions were asked from various areas, and by and large, your information base and the knowledge base is also outstanding. थैंक यू सर Some थैंक यू फॉर सीइंग area, दैट yes, समर शकील जी कुछ कुछ एरिया को थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा. जी पहला सर तो यह है कि whenever you start speaking any sentence, I believe should not be spoken too frequently. I ओके believe सर एक बार दो बार तीन बार, that's it, not beyond that. The next thing is कि there was a question कि आपकी personality के three weaknesses. So please adhere to the question and its answer. You have to answer the question. So since we all are human beings and therefore we all have certain weaknesses, you must be humble enough to accept your weaknesses, and you can start the answer of this question in this way, that since I am a human being, therefore I have certain weaknesses, but I am trying to overcome them. And then the points which you said, you can say those weaknesses, only those weaknesses which are very moderate in nature, and which would not hamper your administrative skills or the governance in Bihar. इस तरह के पॉइंट्स आप ले लीजिएगा जो माइल्ड इन नेचर हो. ओके सर द नेक्स्ट थिंग इज कि एक स्टेटमेंट आपका, एक दो स्टेटमेंट आपका आया कि बिहार से मेरा कम वास्ता है. नाउ ओके सर दिस स्टेटमेंट यू कैन गिव अप. ठीक आवश्यकता है नहीं सर है. You must show as far as possible कि you are very familiar with Bihar, because हम्म ultimately
the honorable board members, they want that a candidate who is appearing in interview and who wants to become an administrator in Bihar should be very familiar with Bihar. So therefore you can drop this statement. Okay, sir. और एक और उसी से जुड़ा के स्टेटमेंट था कि बिहार में काम करना मुश्किल होगा जो दिल्ली में रहे हैं. तो you just have to say कि it would be very enjoyable experience, very pleasant experience to work in Bihar. आप इसको बहुत ही सर स्टेटमेंट में तब्दील कर सकती हैं. सर ये नहीं बोला जा सकता कि बिहार में काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ये वर्ड यूज. Not at all, not at all. You can say this way कि it would be an excellent opportunity. आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दीजिए. जो वर्ड है उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं. ओके सर, ठीक है. The next thing is कि suppose मान लीजिए you are not sure about any answer, you first have to seek permission to take guess and thereafter you can guess the answer. Okay. It should not be the other way around. You have answered the question and halfway, somewhere midway, you get stuck and then you ask for permission that may I guess. तो इसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा. The next thing is कुछ ऐसे आंसर्स थे जो थोड़ा सा लंबा हो रहा था. Please do understand that honorable board members, for any answer, they may give you hardly 2 or 3 sentences to answer and thereafter they will start another question. तो आप कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉइंट है आपका वो 2-3 सेंटेंस में ही सबसे पहला वाला आ जाए, so that in case they interrupt, your best answer would have been answered. Then प्लीज अंडरस्टैंड कि सिंस आपको बिहार में सर्विस करनी है, आपका सिलेक्शन होगा, तो बिहार के बारे में जानकारी रखिएगा जिसमें कि 7 निश्चय के एग्जाम्पल के तौर पर है. नाउ यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है. सपोज मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं है, तो इट इज बेटर टू बैक ऑफ अर्ली रादर देन टू एंटर इनटू द क्वेश्चन एंड देन टू क्रिएट सम ट्रबल. जैसे क्या हुआ कि जब आप आंसर कर रहे थे तो 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंफ्यूजन देयर वाज. ठीक है, इट्स बेटर टू बैक ऑफ अर्ली. आप उसको बैक ऑफ कर जाएंगे तो दे विल शिफ्ट टू अ फ्रेश क्वेश्चन. ओवरऑल समर शकील जी, वेरी एक्सेलेंट पर्सनालिटी you have. You are a very good speaker. Thank you, sir. Your knowledge base, as I said earlier, is very excellent. You are a very potential candidate to get high marks in interview. थोड़ा सा आप जो चीजों को ब्रश अप कर लेंगे, you have a very excellent personality to score very high marks. Thank you, sir. Thank you for saying that. Over to Pooja ma'am. और जैसा कि सर ने कहा, इंटरव्यू में आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सारी बातें लगभग सर ने बता दी हैं. इन सभी चीजों को आप एक बार देख लें, ब्रश अप करना है आपको. और मेरी तरफ से बस एक यही सजेशन है कि बिहार सरकार की 7 निश्चय 1 और 2 ये जो योजना है काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इनका काफी प्रेशर रहता है, हर जगह प्रचार रहता है. दोनों को आप मिक्स कर रही थी, इसे अलग अलग आप मतलब किसी भी योजना से कुछ भी पूछा जा सकता है. कभी कभी बोर्ड के मेंबर लाइन वाइज योजना पूछ देते हैं, तो इसे एक बार आप जिसको रट्टा मारना कहते हैं ना, वो योजना को आप एक बार अलग करके दिमाग में फिक्स कर लीजिए. और ऑल द बेस्ट. आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है, डिजर्विंग है और आपका सिलेक्शन निश्चित है. ओवर टू भावना मैम. वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट यू आर, नो डाउट अबाउट दैट. जैसे कि सर ने आपको अभी बताया, बिहार के बारे में पढ़ लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप पार्ट 1 बता रहे थे, द क्वेश्चन वाज अबाउट पार्ट 2, राइट? इसीलिए मैम मेरे को कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी. चलिए, और तो मैम मेरे वो मास्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को टाइम थोड़ा कम, टाइम का क्रंच हो रहा है कि मैं रिवाइज नहीं कर पाई. मेरे एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं तो मैं इस पे ज्यादा वर्क करूंगी. थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दैट. डेफिनेटली. और आप थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देख लीजिएगा, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ओपन स्कूल के बारे में क्या है, उसमें बाकी का बीटी के बारे में क्या है. आप सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स को एक बार देख लीजिएगा. अदर देन दैट, एक एडवाइस है कि आप अपने गर्दन के मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए. ठीक है, ओके. व्हाइल स्पीकिंग, तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा. थोड़ा सा स्माइल भी जरूरी है बीच में. ठीक है, so that the board members can feel that you are enjoying this interview, you are enjoying the process. ठीक है, you are enjoying talking with them. ठीक है, so that is also a necessary aspect. Other than that, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. You will definitely get through this.
right? And best of luck from our side. थैंक यू समर शकील मैम। जी, एक चीज बोलना चाहते जी हैं, आप कंटिन्यू कीजिए जी पहले। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि बोर्ड में 4 या 5 मेंबर्स होंगे, तो मुझे आई कॉन्टैक्ट किससे मेंटेन करना है? जैसे मुझे सबको कन्वर्सेशन में इंक्लूड करके, तो मतलब सब जो क्वेश्चन पूछेंगे उनसे देखिए, भी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, या जैसे थोड़ा बहुत ग्लिम्स जैसे होता है कि हर मेंबर को देना होता है, या ऐसे, या सिर्फ जो पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं या मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ नहीं उनसे ही कॉन्टैक्ट? नहीं, आप जो चेयरपर्सन होंगे उनके सामने जस्ट बैठेंगी, ठीक है? जी। उनसे तो आपका आई कांटेक्ट होगा ही, लेकिन हम्म। आपको सभी से अपना आई कांटेक्ट बना के रखना है। ये नहीं कि हम बार-बार ओके। ऐसे गर्दन हिला रहे हैं, हम्म। लेकिन हम्म। जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करने के दरमियान हम इधर भी देख रहे हैं, थोड़ा उधर भी देख रहे हैं, इस तरह यस से। मैम। और एक ठीक सजेशन है। हम देना चाहेंगे, जैसे मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, ठीक है? जी ग्रेजुएट मैम। होना है, तो आप अपना जो ये एमए वाला पोर्शन है, इसे आप बोर्ड मेंबर को बताइए ही नहीं जब आपके बारे में पूछा जाए, नहीं तो वहां से एक पूरा चैप्टर आपका खुल रहा है। हम, है ना, ओके। जितना कम चीजों को खोलेंगे उतना कम क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, हम क्यों खोलें, हुँ। है ना? तो एमए वाला चैप्टर ही आप क्लोज कर दीजिए, नहीं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल तो एमफिल में क्या डिफरेंस है, पीएचडी में क्या डिफरेंस है, न्यू एजुकेशन ओके। पॉलिसीज में क्या-क्या है, सारा कुछ आपका खुल सकता है। और आप ओके, सारी ओके चीज़ों मैम। को फिर भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हम लोगों की तरफ से यह एक सजेशन है ठीक है मैम। कि जैसे ना आगे मैम, मैंने मास्टर्स मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है, एंड मैंने जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं ये ना बताऊँ, मुझे लगा कि ज़्यादा ये अच्छा है। क्वालिफिकेशन बताएँगे तो मे बी प्लस पॉइंट टाइप हो कुछ ऐसा? क्योंकि हाँ, मैंने ये हो सोचा सकता है है, कि कभी-कभी प्लस पॉइंट होते भी हैं, आप देख लीजिए। अगर आप जेआरएफ का नाम लेते हैं, तो सारी चीज़ों को उसके बारे में क्लियर कर लीजिए, और एमए का नाम ओके लेते हैं, मैम। मतलब सभी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है, क्योंकि कब होता है, एग्ज़ामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, इससे क्या हुँ। बेनिफिट है, जेआरएफ में अभी कितनी राशि मिलती है, पहले कितनी मिलती थी, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ओके। इसके लिए हाँ आप मैम। प्रिपेयर रहिएगा, उसके बाद ही आप उस पोर्शन को खोलिएगा। क्योंकि मैम जो मेरा ग्रेजुएशन है वो 2018 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर लिया अपनी स्टडीज़ कि मुझे प्लान बी की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो मैंने प्लान बी को एज़ एन कि रिसर्च स्कॉलर या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे मैं अपना प्लान बी रखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मास्टर्स भी किया और मैंने हायर स्टडीज़ की तरफ भी ध्यान दिया है। नहीं, तो तो हम लोगों को जेआरएफ के बारे में पता नहीं था कि आपने क्लियर किया है। ओके जेआरएफ मैम। आपने क्लियर किया है तो आप बता सकते हैं वहाँ, लेकिन आप जी मैम। सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, आगे पीछे क्या है, क्या नहीं ओके। है। क्योंकि मैम ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि आपने 2018 में किया है और ये काफ़ी लंबा समय हो गया है कि आप इस तैयारी में फिर भी हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं कह सकती हूँ कि मैं परस्यू कर रही हूँ मास्टर्स, मैंने मतलब सिर्फ़ 3 साल का गैप करके फिर अपना मास्टर्स स्टार्ट कर दिया। तो इस पे मैं राय जानना चाहूँगी आप लोगों की कि क्या मुझे बताना चाहिए, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए? मैं अपने सब्जेक्ट से अच्छी तरीके से मतलब पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सब्जेक्ट से स्कोप होगा। प्रॉब्लम नहीं होता है, सब्जेक्ट से भी लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है। क्वेश्चन अदर अच्छा। अदर जगहों से किया जाता है। जेआरएफ हुँ। आपने किया है तो इसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ओके ने मैम। सोचा सिर्फ एमए की बात है, जो कि अभी आपका चल रहा है। बाकी सर भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ओके। ओके, ओवर टू Samar सर। Shakeel ji, the point is your DAF यस is मैम। your sort of identity which you have to disclose before the honorable board members. So therefore, every word being mentioned in your DAF should be understood in depth by you, because हुँ। questions would be directly as well as indirectly from your DAF. So if you are disclosing any information, you must be thorough with those informations. It's as simple as that. ओके सर। तो आप जो भी आप अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको जो भी डिग्री आपने हासिल की है, आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आप क्रॉस क्वेश्चंस अगर आपका उसके लिए आप रेडी हैं, तो बिल्कुल यू गो अहेड। हुँ। दैट इज़ द पॉइंट हियर, ओके सर। दैट इज़ द पॉइंट हियर। ठीक है? सर जैसे आपने वो इज़राइल और पैलेस्टाइन का इश्यू पूछा,
तो आपको ये कहीं से लगा कि मैं इसको ओवर स्ट्रेच कर रही हूँ? जैसे मैंने 2 बार सेम चीज़ बोली है कि इंडिया का स्टैंड डिहाइफिनेशन हुआ है इंडिया के स्टैंड में, और इंडिया इस तरीके से भी हेल्प कर रहा है और उस तरीके से भी हेल्प कर रहा है। तो आपको कहीं से ये लगा कि मैंने ये ओवर एक्सप्लेन किया है, ये बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है और नॉट इसको छोटा नहीं नॉट सर? नॉट एट ऑल। ओके सर, आपका ओके पोजीशन सर। बहुत अच्छा था, आपने डिप्लोमेटिक तरीके से उसका आंसर देकर आप वो जो क्वेश्चन था दैट वाज अ ट्रैप फॉर यू, लेकिन आप उस ट्रैप से बाहर आ गई। वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आंसर ऑन दैट फ्रंट। वो बहुत अच्छा था, ओके सर, बहुत अच्छा था। ओके